हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, others people are joining in, so let's wait for another 1 minute, and after that we'll start. Okay, so yeah, just 30 seconds, not more than that. So in today's class, what we are going to discuss, we are going to discuss alternating current. Okay, so we will do questions from alternating current. In the exam, you will get one question from here. Okay, and in NEET exam, you will get more than one. That is around two. You will get done. So alternating current may. I'm not going to discuss anything here, like anything related to theories, but through questions, I will keep on giving you concepts. Done. So let's move on to the very first question, and very first question is you here. Even if you have not studied alternating current, it's fine. I will discuss the things, but I hope you all must have studied in your classes a little bit of it. So that will help you in understanding the question. If you are understanding it, that is enough also. Later, we will discuss the question. Okay. So take 1.5 minutes and do it. You all have studied this topic, right? So the question is very simple. You just need to like phase differences given between EMF and current. You have to say ki which of the following circuit will exhibit this, right? With which pair it is possible? JNB Gandhi Nagar. Not not correct, but good. You tried. Others? You can correct your option. You can look at like your solution and see where you're going wrong. You can recheck it. Okay, let me discuss a bit of it. So suppose you have a LCR circuit. So LCR circuit का मतलब, चलो मैं basic बताती हूँ. LCR circuit meaning circuit that has L, that has C, that has R. So what is L? That is inductor. What is inductor? जैसे solenoid आप लोगों ने पढ़ा है. So solenoid में there was a coil of wire like this. So this is nothing but inductor. Then so inductor is nothing but conductor. So that is your inductor. Capacitor you already know. Then this is resistor. Then and you all have studied like in mutual inductance or self inductance. I didn't discuss. I will discuss that in tomorrow's class. So there you will see कि this inductor will offer some resistance to the flow of current.
Capacitor also offers some resistance to the flow of current, and resistor offers resistance to the flow of current, है ना? This thing we already know. So we will now define the resistance offered by inductor, resistance offered by resistor, that is also two things. So resistance offered by inductor is written as XL, and XL is written as what? That is written as omega. Okay? L is what? Inductance. Inductance of the inductor. Omega is what? Angular frequency. Angular frequency of what? Voltage. जैसे suppose कर लो, this is inductor, this is capacitor, and this is resistor. These three elements are connected to a AC battery. So if this is a AC battery, it will get written as what? V naught sine omega t, like that. So this omega is here. This. Then so XL is omega L. This is resistance offered by inductor. This is also called reactance, right? So C का resistance क्या लिखोगे? XC, and that is equal to 1 by omega C. Done. Now the question is how we add, like here you can see this inductor, capacitor and resistor are in series. So if they are in series, how we will add their resistance? Just like we do in series. So are we going to write like ki XL plus JNP Gandhinagar? Try किया, but that's not the correct answer. Actually, I'm sorry. XL plus XC, anyway, no problem. XL plus XC plus R, ऐसा कुछ लिखोगे क्या? This will become wrong. ये क्या हो जाएगा? Wrong हो जाएगा. So here we move somewhat vectorially again. Why we do that? Let's forget that because that is not of importance. So यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? That I'm going to tell you. So do one thing. XC को क्या लिखते हैं हम लोग? XC को लिखते हैं IXC. XL को क्या लिखते हैं? माइनस आई एक्सएल. नाउ व्हाट इज दिस आई? सो यू ऑल रिमेंबर व्हाट इज दैट? कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नंबर को आप कैसे लिखते हो? जैसे कोई भी नंबर अगर सी है तो उसको, सॉरी नंबर सी है तो उसको कैसे लिखते हो? ए प्लस आई बी. इसका क्या मतलब होता है? ए इज द रियल पार्ट, बी इज द इमेजिनरी पार्ट, राइट? सो दैट आई इज इमेजिनरी पार्ट मीन्स, अगर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग वेक्टर की तरह भी ट्रीट करते हैं. सो ए इज बेसिकली, if I talk about it like a vector, so A is component along x axis and Y is component along, sorry, B is component along the y axis. And this in term of complex number is written as A plus IB. A is the real part, B is imaginary part. Done. So here also for calculating the resistance of total resistance of this LCR circuit, R equivalent we will write as what? We will write as R plus IXC minus IXL. Okay. So this will become what? R plus IXC minus XL. And this R equivalent is called not equivalent resistance, it is called reactance. ठीक है, इसको reactance बुलाते हैं. So this is your reactance. अब देखो reactance का magnitude क्या होगा? So complex number का जैसे magnitude निकालते हो या फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हो, इफ y कंपोनेंट इज गिवन, x कंपोनेंट इज गिवन, हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस x कंपोनेंट का स्क्वायर. उसी तरह से मैं वेक्टर की तरह इसलिए डील कर रही हूँ क्योंकि देयर मस्ट बी सम स्टूडेंट्स ऑफ नीट एंड दे वोंट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो चलो वेक्टर की तरह ही लेकर चलते हैं. सो x component is r, y component is xc minus xl. So this is r square plus xc minus xl का square. This is real. Now what it has to do with the phase? तो देखो यहाँ पे phase कैसे बनाओगे? ऐसे कुछ बना लो axis. मैंने बोला x component is what? R. So draw R along this. Y component is how much? This is xc minus xl. Equivalent of these two will be something like this. ठीक है? Something like this. And this angle is called phase. This angle is called what? Phase. तो अगर आप यहाँ से tan phi लिखोगे, phase, tan of phase angle, phase difference between voltage and current. This phi is what? Phase difference between voltage and current. ठीक है, so tan phi will become equal to xc minus xl by r. So this is all. How it is becoming phi? I am telling you. How phi I am treating as phase difference between current and voltage. ठीक है.
सो दैट वी विल डिस्कस लेटर. अभी के लिए इतना समझ लो, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए. So whatever net you are getting, that will make certain angle with the R, and that angle is your phase difference between current and voltage. ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना था? In the question it was given, phase difference is pi by 4 between EMF and current. So tan phi you will write as what? You will write as XC minus XL by R. Done. Now try putting in the things. RC circuit with R 1 kilo ohm, C 1 microfarad. तो यहाँ पे देखो L तो है नहीं, so XL is 0 here. ठीक है. XC क्या होगा? XC क्या लिखते हो? 1 by omega C by R. ठीक है. यानी कि 1 by omega C R. Put the values. Omega value is how much here? Sin omega t. मैंने बोला ना ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या था? जैसे यहाँ पे हमने बताया this is V naught sin omega t. So this is omega. Done. And in the question, your voltage is given as what? Here your voltage is given as E naught sin 100 t. So this 100 is what? Omega, right? So 100 है. C कितना दिया हुआ है in the option? C is 1 microfarad. 10 to the power minus 6. R का value will be how much? 10 to the power 3. So this is equal to how much? Chain B Gandhi. Yes, XL minus XC. Correct. So if you're going to calculate it, you will get it as 1. And tan phi is 1. It means phi will become equal to what? 45 degrees. So first option is correct itself. For rest, you can check. LR circuit है, तो for LR circuit you will be writing tan phi equal to what? XC 0 हो जाएगा, so minus XL by R, right? If modulus you're dealing with, तो mod ले लोगे XL by R. RC circuit के लिए again XC by R, LR circuit XL by R. So this is how we deal with things. ठीक है. So देखो this is very important. LCR circuit में components को कैसे लिखते हैं, resistance को कैसे लिखते हैं, that is very important. So this is IXC, this is minus IX, and R equivalent we write like this. So this is going to be very important to understand AC. Done. चलो, I hope it is clear. Confuse नहीं होना है. तुम्हें सिंपल ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे L है, C है, and if this is R, and if voltage is given V naught sin omega t, V naught is amplitude of the voltage, then how we will calculate phase difference between voltage and current, how we will calculate reactance. So first question से हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा how we will calculate reactance, how we will calculate phase difference between what? Between current and voltage. ठीक है. These two things we learned. Over. ये चीजें हमने पढ़ी. और जो हमारा ग्राफ बना वो कैसा बना? इधर R हमने लिखा था, इधर XC था, इधर XL था, डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसे. तभी हमने लिखा XC माइनस XL. XL माइनस XC नहीं लिखा था, XC माइनस XL. ठीक है. डन. सो दिस इज दिस. चलो अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. डू इट. टेक अगेन 2 minutes आई एम गिविंग यू जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन की क्वेश्चन में चल क्या रहा है. डन. And try solving it if you have studied properly. Chalo.
like RC circuit I have discussed now. RC circuit I discussed, right? DC RC circuit, where voltage was not a AC voltage, DC voltage. I have discussed charging of capacitor, discharging of capacitor. If you remember, Q was what? Q naught 1 minus e to the power minus t by tau. And tau was R into C. Then similarly, this is a LR circuit. जैसे if you are closing the key, चलो मैं hint देती हूँ. If you are closing at t equal to 0, K1 is open. What is happening? The key K1 has been kept closed for a long time. We closed it for a long time. Then, and if we are closing it, what will happen? Current will flow like this, and that will charge the inductor. Here, charging of inductor is happening. So during charging, again, this was for the RC circuit. Charge we were calculating. यहाँ पे हमें charge से मतलब नहीं है, because this is not capacitor having plates positive and negative, and we need to calculate what charge one plate is getting after what time. Here we have only T. Here we have to only deal with current. So current after time T को क्या लिखोगे आप? I equal to I naught 1 minus e to the power minus t by tau. तुम पूछोगे कि मैम टाउ की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? This is not a RC circuit. This is LR circuit. So in LR circuit, tau का value is equal to how much? Tau is equal to L by R. ठीक है? So this is charging of inductor. So during charging of inductor, current will be this. And during discharging of inductor, current will be how much? I naught e to the power minus t by tau. This is during discharge. Okay? Now you solve the question. Now you can do it. I naught का value क्या होगा? This is maximum current. So maximum current will be equal to E by R always. है ना? E by R. If any doubt you're getting in solving the question, that also you can ask me. Okay. Chalo, let me do one thing. Let me discuss LR circuit. Okay. So LR circuit, what is happening when we will charge the LR circuit? So this is L, this is R. Okay. And it is connected with a DC source like this. Let its EMF be E. And its inductance is L, its resistance is R, suppose. So if you're charging it, during charging, what will happen? Because when we will charge the inductor, it will be connected with a battery. Okay? So this is the charging circuit. And in charging circuit, current and any time t is given as what? 1 minus e to the power minus t by tau. Just now I said tau is equal to what? L by R. This is this is time constant. Its unit will be what? Second only. Because it is related with time, right? It is just time. Now you just see here in capacitor we have discussed in a steady state capacitor behave as a what? As a insulator, and at t equal to 0 capacitor behave as a conductor. And similar thing we will encounter here, but in the opposite way. जैसे देखो यहाँ पे, if you are putting t equal to 0 here, if you are going to put t equal to 0 here, I will become what? I will become 0. I क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा. ठीक है? So inductor initially behave as what? As insulator. क्योंकि current 0 हो रहा है. It means
in this circuit, if key is closed, still current is zero. It means something of very heavy resistance is present. So here inductor is acting as an insulator. Now, if you talk about डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, तो क्या होगा, इस एल आर सर्किट को तुम क्या करोगे, बैटरी से हटाओगे और ऐसे कनेक्ट कर दो. So this charged inductor will start flowing current in this circuit and this inductor will get discharged. ठीक है. So inductor की चार्जिंग भी होती है. इंडक्टर कैसे चार्ज कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो इन योर वीकडेज क्लासेस. ठीक है, अभी के लिए ऐसे समझते हैं. So in this case, current will be what? I naught e to the power minus t by tau. Done. Again, I naught का वैल्यू क्या लिखोगे? E by R. I told you, क्योंकि maximum current in this circuit can be what? E by R. If L resistance offered by L is 0, in that case, maximum current will get E by R. So this is E by R. Current is E by R, right? Maximum current. E to the power minus t by tau. If you talk about here, at t equal to 0, in this case at t equal to 0, current I will be maximum, and after t equal to very long time, I will become 0. Finally, this inductor will get discharged. अब यहाँ पे आप देखो, after long time, what will happen here while charging? After long time, यानी कि if t is infinity, so this will become 0, I will become I naught. So in a steady state, what happens? Current is maximum in the circuit. Done. तो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? An inductor and a resistor connected in series to a battery of this shown below. The K1 key has been kept closed for a long time. So K1 को तुमने close किया है long time के लिए. If you are closing it for long time, what will happen? Maximum current it will attain. Done. So that is that. Then at t equal to 0, K1 is opened. What we are doing? T equal to 0 पे K1 को open कर दिया. And now what is happening? K2 is closed. Done. So K1 was pressed for long time. It means the inductor is fully charged. And after that, what we are doing? We are closing K2, opening K1. Now this will discharge. Done. So what will, क्योंकि then if K1 is open, K2 is closed, circuit will become this. Now current in the circuit will be at t equal to 1 millisecond. So current को क्या लिखोगे discharging circuit में? I naught e to the power minus t by tau. तो निकाल लो अब. I naught will be E by R. So that is your 15 volt by 0.15 kilo ohm into 10 to the power minus 3 करोगे. ठीक है. E to the power t का वैल्यू कितना है? मिलीसेकेंड. 10 to the power minus 3. टाउ कितना होगा? तो एक काम करो, टाउ को निकाल लो. टाउ का वैल्यू क्या होता है? L by R. So L by R तुम कर लो. L की वैल्यू कितनी दी हुई है? L is your 0.03 हेनरी और R कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 0.15 किलो ओम. So that is your 0.15 into 10 to the power minus 3. So just put the things. What you will be getting here, this is 0.03 and this is 0.15. ये कट हो जाएगा पूरा ही 3, 5 and 10 to the power 3 by 5, something like that. अब टाउ का वैल्यू यहाँ पे रख दो. तो y क्या करोगे? 10 to the power 3. 10 to the power 3 है ना? Yes. So that is into 5 t by tau. I hope I have not done any calculation mistake done, but it looks like I have done. Let me know tau ka value. I have calculated it rightly or not. Anyone else? L is 0.03, right? R is 0.15. Sorry, this is kilo ohm na, so 10 to the power plus 3 hoga. Done. So this was the mistake. This is minus 3. This is minus. This is this. So e ka power 5. E ka power 5 is given as 150. So now things are done. And 15 by 150 into what? E to the power 5 is 150, but here this is minus 5. No, this is minus 9. So e to the power minus 5. So if e to the power 5 is 150, so e to the power minus 5 will become what? 1 by 150. So यहाँ पे आप क्या करोगे? Into 1 by 150 kind of. So you will now calculate it and you will get the answer. ठीक है? Calculation सही से करनी. So this is your LR circuit. देखो LR circuit के charging discharging में now you don't need to know anything else. This is all you have to remember. ठीक है?
नथिंग एल्स। चलो आगे बढ़ते। सो दिस इज ऑल अबाउट योर LR सर। What how it will behave at t equal to 0 and t equal to infinity, that is in steady state। ठीक है, स्टेडी स्टेट में वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, लाइक अ कंडक्टर। या जेएनबी गांधीनगर। मैं ये सजेस्ट करूंगी, देखो थ्योरी पे टाइम स्पेंड करने का कोई फायदा नहीं है। इफ यू नो द फॉर्मूलाज, इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, यू शुड ट्राई टू डू मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू। थ्योरी पार्ट देखो, तुम्हारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ना जनवरी में, तो तुम्हें क्या करना है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुम्हारे पास कितने टाइम है, दिस इज सितंबर राइट। सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यार 3 मंथ बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, मैं बता रही हूँ, दिस इज टू मच। जैसे अभी क्या है, वी विल गेट डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो जहां तक मैंने पढ़ाया है, तुम लोग ज्यादा टेंशन नहीं लो। अप टू दैट पार्ट डू एज मच क्वेश्चन एज यू कैन। विथ सेकेंड पार्ट वी विल बी स्टार्टिंग वेरी सुन। मुझे पता है बीच में हॉलीडे आएगा, क्लासेस कम हो पाएंगे, बट स्टिल डोंट वरी। मॉडर्न फिजिक्स आई विल फिनिश वेरी फास्ट एंड आई विल फिनिश इन सच अ वे कि यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स से 4-5 क्वेश्चंस आएंगे, सो दैट वी विल डू प्रॉपरली, वो हो जाएगा। बचा तुम्हारा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, बस उसी पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना है क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। सो दैट वी विल डू। फॉर नाउ व्हाट यू शुड डू इज की डेरिवेशन पे मत जाओ प्लीज। तुम्हें फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट्स को पता करने का कोशिश करो। एंड टू नो कॉन्सेप्ट्स वेल यू नीड टू डू मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं शॉर्ट में जा रही हूँ, बट इस तरह से जा रही हूँ कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट में कोई लैग ना हो। Done? So this is, I hope I answered your query. टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बट अप्रोच सही होनी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करते हैं यहाँ पे। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर, दैट इज योर EMI, ठीक है। मैंने लिया है ये क्वेश्चन जस्ट टू चेक कि तुम्हें याद है कि नहीं। आई हैव टॉट दिस टॉपिक, दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, सो आई जस्ट वांट टू सी इफ यू कैन सॉल्व इट। चलो करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। Come on here, you all must have studied this thing, right? I have also taught in the class. So this has to deal with like the magnitude of change in flux through the coil will be what? I versus T graph is given. In the previous theory class also I discussed EMF induced को क्या लिखते थे? JNB गांधीनगर. But magnitude is not correct यार. You need to check करो. I have discussed, right? I discussed ki change in flux, if there is a coil and if flux is magnetic flux is changing through it, EMF will get induced, okay, current will get generated, and if current is getting generated, charge will flow. So amount of charge flowing is related with change in flux. How? So delta phi by R, where R is the resistance, is equal to delta Q. Charge flowing through the circuit will be equal to change in flux divided by resistance, right? So change in flux हमें निकालना है, resistance दिया हुआ है, I versus T graph is given. So I versus T graph, I equal to क्या होता है? dq by dt. So I dt will become equal to what? dq, charge flowing. Done. So I versus T graph का जो area है, that is I dt, will give us what?
charge, amount of charge flowing, or charge value that has changed, right? So this area will give us dq. है ना? Area under curve we calculate as what? If this is y, this is x, then area under curve is y dx. So here area under curve is I dt, because along y axis there is current, along x axis there is time. So here current area under curve will be I dt, and I dt is equal to dq. So area इसका कितना होगा बताओ? डेल्टा फाई को क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू इंटू आर. आर का वैल्यू कितना है? 100. एरिया निकालो इसका. इसका एरिया क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू? सो दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट. हाइट इज हाउ मच? 10. बेस इज हाउ मच? 5/10, right? So this is equal to 500/2, that is 250 Weber, right? Done. So this is the answer. This you needed to calculate. देखो, just now JNB Gandhinagar, I got a doubt from there कि theory पे concentrate करें या question solving पे. So I have discussed this theories, right? Still you were not able to solve it. Why? Because you didn't practice questions. So to really understand a concept properly, you need to do more and more question. Only when you will do the question, you will understand where you are lagging. So that is very important. Done. So here answer is 250 Weber. चलो अब इस क्वेश्चन को करो. थ्रू दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई विल गिव यू वन कॉन्सेप्ट. तो पहले आप इसको देखो. वैसे इसमें टाइम देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है. इफ यू नो द फॉर्मूला यू विल गिव मी द आंसर. सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम 1 minute, less than 1 minute. ठीक है? If you know the formula, you will get the answer. A formula based question. But I will explain to you what is the meaning of quality factor, because we get different questions. Okay. JB Gandhinagar, yes, correct. You know the formula. Okay, done. Others, please. JB Rajkot, very good. Correct है. Others, please. Mahisagar, JNV Dahod, Bhavnagar. Okay, so what is quality factor actually? जैसे अभी मैंने एक चीज डिस्कस की थी, दैट इज योर LCR सर्किट. ठीक है? सो व्हाट इज दैट? L will be there, inductor will be there, capacitor will be there, resistance will be there. ठीक है? और मैंने कुछ ऐसे डिस्कस किया, ऐसे यहाँ पे वोल्टेज था V0 sin omega t. Current flowing in this circuit will be what? Current flowing in this circuit will be what? I will be equal to V by what? R equivalent, that is reactance. Done. So V को क्या लिखोगे? V0 sin omega t divided by reactance को क्या लिखोगे? reactance को मैंने क्या बताया था? R square plus XC minus XL का square, ऐसे लिखोगे. ठीक है? If I talk about maximum current, then we will take maximum value of the voltage, that is V0, and minimum value of the resistance. So if I am going to minimize the bottom part, how I can minimize it? I can't make R equal to 0. I can't do this. Q, because this is a LCR circuit and R has to be there. Again, we can't make XC 0, XL 0, because this is a LCR circuit. 3 components will be there, right? But to minimize it, we can do one thing, XC equal to XL kar sakte hai na? And in that case, this will become 0. And if this is becoming 0, reactance will become minimum, right? So XC equal to XL करेंगे तो मुझे current maximum मिलेगा, and that condition is called resonance. Maximum current जब हमें मिलता है सर्किट में, we call at that point कि सर्किट हमारा क्या है? रेजोनेंस में. ठीक है? So maximum current कब मिलेगा? when XC equal to XL. XC क्या होता है? 1/ωc. XL क्या होता है? omega L. So for resonance condition, omega should be equal to what? 1/LC का root over. ठीक है? So this is the resonant frequency. इस frequency को हम लोग क्या बुलाते हैं? Resonant frequency.
ठीक है। अब देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में एक ग्राफ पढ़ना है जिसको बनाना किसके किसके बीच है, करंट वर्सेस ओमेगा। सो द ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है, इसको याद रखो, ऐसा दिखेगा। इस ग्राफ से तुम्हें क्या दिख रहा है, फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी देयर इज अ पॉइंट एट विच करंट इज व्हाट, मैक्सिमम। सो यहाँ पे हमारा करंट क्या हो गया है, मैक्सिमम। और अभी अभी मैंने बताया कि करंट मैक्सिमम कब होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। So at this point, frequency is what? Omega naught. That is resonant frequency equal to 1 by root under L. उस ग्राफ में एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, दो डिफरेंट पॉइंट्स दे हैव टेकन, वन पॉइंट इज दिस, अनदर पॉइंट इज दिस। सो at this point current is taken as I naught by root 2. I naught is what, maximum current, ठीक है। so at two, for two frequencies, एक frequency को ओमेगा 1 बुला लो, दूसरे फ्रीक्वेंसी को क्या बुला लो, ओमेगा 2। सो फॉर टू फ्रीक्वेंसीज वी आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आई नॉट बाई रूट, ठीक है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बैंडविड्थ बुलाते हैं, ठीक है, इसको बैंडविड्थ बुलाते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा बैंडविड्थ क्या है, अगर ग्राफ दिया हुआ है, यू कैन लोकेट द बैंडविड्थ, दिस इज बैंडविड्थ, ओके। नाउ चलो मैं ग्राफ को फिर से ड्रॉ करती हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। यहाँ पे ग्राफ को मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, दिस इज आई वर्सेस ओमेगा ग्राफ। अब दो ही पॉइंट को लेकर चलते हैं, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ, दिस इज द पॉइंट एट विच करंट इज व्हाट, आई नॉट बाई रूट 2, इसी से डील करना है अभी हमें। दिस इज द बैंडविड्थ, दिस इज योर ओमेगा नॉट, दिस इज ओमेगा 1। तो ये डिस्टेंस कितना है, इसको डेल्टा ओमेगा ले लो। सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो डेल्टा ओमेगा, क्योंकि ग्राफ इज सिमेट्रिकल अराउंड विच पॉइंट, अराउंड दिस लाइन, ठीक है। सो इफ दिस इज डेल्टा ओमेगा, दिस इज ऑल्सो डेल्टा ओमेगा। तो बैंडविड्थ का वैल्यू कितना हो गया, 2 डेल्टा ओमेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा डेल्टा ओमेगा होता है, वो होता है आर बाई 2, ठीक है, दिस इज योर आर बाई 2। तो अगर बैंडविथ निकालना है 2 डेल्टा ओमेगा, 2 इंटू आर बाई 12, सो दैट इज इक्वल टू आर बाई एल, दैट इज बैंडविथ, ओके। एंड व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो कोई भी एलसीआर सर्किट के लिए बताता है कि वो सर्किट कितना अच्छा ट्यूनिंग कर सकता है, ठीक है, दैट वी विल एक्सप्लेन लेटर, these are quite descriptive thing, but let's understand quality factor. So quality factor is what, resonant frequency by bandwidth, ठीक है। तो resonant frequency by क्या लिखोगे, bandwidth। if you're going to write it, omega naught 2 delta omega 2 into L by 2R, so you will get formula as omega naught by L, ठीक है। so this is your what, omega naught L by R, sorry मैंने आर बाई 12 है ना, ये देखो मैंने गलत लिखा यहाँ पे, ओमेगा नॉट एल बाई आर, दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर। सो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ याद रखो, ठीक है, ये ग्राफ को याद रखना है सही से, डन। एंड क्वालिटी फैक्टर ये। अब व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, व्हाट डज इट कन्वे, क्या मतलब होता है सर्किट में, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर इन द थ्योरी क्लास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी अगेन नीड टू डू मोर क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। Now let's do this question. Okay, I'm giving you 1.5 minutes again. Karo, question is not difficult, very easy. Again, through this question, I will give you a very important concept. So, सही से थोड़ी देर सोचो, उसके बाद we will move on to explanation. Okay?
Anyone? देखो, to solve this question you need to know कि how we draw features and everything. पहले देखो एक चीज, don't get confused. यहाँ पे suppose I'm like we are dealing with AC circuits, right? चलो, I got one answer, and this is correct. Okay, very good, very good, good. So I'm going to just discuss with the phasor. Suppose कर लो, we are dealing with what? Alternating current, right? So we are dealing with variable, sorry, with voltage that is not constant, that is varying. ठीक है? So AC circuit can be, जैसे मैंने बहुत ही simple सा लिया, तो I took की there is L, there is C, there is R, है ना? So this is the most complex circuit because in this circuit C is present, L is present, R is present, voltage is variable, voltage is AC. So that is V naught sine omega t. अब suppose कर लो, I have a circuit where L is not there, C is not there, only R is there. ठीक है? So this is R and this is my voltage, something like this. So V naught sine omega t. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, this is R. So current क्या होगा? Current हो जाएगा तुम्हारा, करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. सो यू विल राइट V नॉट साइन ओमेगा t बाय R. ठीक है? सो हाउ मच वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट? V नॉट बाय R को मैं I नॉट बुलाती हूँ, तो I नॉट साइन ओमेगा. नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड फेजर. वी draw the phasor for different circuits. So for this circuit, if you're going to draw the phasor matlab I'm going to draw a graph where I will indicate voltage and current. ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लूंगी? I will take a coordinate system. तो ऐसा कुछ पहले बना लो. अब ये जो लाइन है वो क्या दिखाता है? So this line basically indicates omega t. एंगल के टर्म में चलना है. ठीक है? Phasor means we have to just deal with the angles. कैसे? Voltage is what? V naught sine omega t. So angle is how much? Omega t. करंट के लिए एंगल कितना है यहाँ पे? ओमेगा टी. एंड दिस लाइन, एक्स एक्सिस वाले लाइन को मैं कितने एंगल लेकर चलती हूँ? ओमेगा टी. ठीक है? इफ यू आर गोइंग क्लॉकवाइज, यू विल राइट एज व्हाट? एंगल यू विल टेक एज व्हाट? इफ यू आर गोइंग क्लॉकवाइज, एंगल पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? लेट मी, क्या लेते हैं हम लोग? साइन कन्वेंशन क्या है? इफ यू आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, एंगल विल बी व्हाट? पॉजिटिव और नेगेटिव? जल्दी से बताओ, कोई भी एक लिखो. कोई नहीं. एंगल क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव. इफ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एंगल वी विल टेक एज व्हाट? नेगेटिव. अब देखो, मुझे वोल्टेज फेजर बनाना है, सॉरी फेजर बनाना है फॉर रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. दिस इज बिकॉज देयर हियर ओनली रेजिस्टेंस इज देयर. तो मुझे वोल्टेज को ड्रॉ करना है, करंट को ड्रॉ करना है. दोनों ही केस में फेजर मतलब, देखो फेजर का मतलब क्या होता है? वेक्टर. ठीक है? दिस इज द वेक्टर. सो यू हैव टू ड्रॉ द करंट वेक्टर, वोल्टेज वेक्टर. डन. सो फॉर वेक्टर यू नीड व्हाट? यू नीड मैग्नीट्यूड एंड यू नीड डायरेक्शन. दो चीजें चाहिए तुम्हें. डायरेक्शन वी आर टेकिंग केयर ऑफ बाय एंगल. एंगल भी मुझे डायरेक्शन बता देगा. इफ आई एम सेइंग कि 30 डिग्री, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्शन. डन. इफ आई एम सेइंग 60 डिग्री, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्शन. सो डायरेक्शन को हम लोग टेक केयर कैसे कर रहे हैं? थ्रू एंगल एंड मैग्नीट्यूड बाय द लेंथ ऑफ वेक्टर. if this is the length, magnitude is this, and if this is the length, magnitude is more, right? So magnitude का टेक केयर कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ फेजर्स. ओके, सो चलो अब ड्रॉ करते. सो फॉर वोल्टेज फेजर कैसे बनाओगे? वी नॉट साइन ओमेगा टी. सो ओमेगा टी एंगल मैंने इसको लिया है, इस डायरेक्शन को. सो माय वोल्टेज विल बी दिस. सपोज दिस इज वोल्टेज फेजर. करंट इज हाउ मच? आई नॉट साइन ओमेगा टी.
current can be smaller than voltage if R is greater than 1, right? So current phasor को मैंने ऐसे बना दिया. This is current phasor diagram for RC, purely resistive circuit. अब एक काम करो, तुम ऐसा ले लो, इंडक्टर ले लो सिर्फ, और यहाँ पे इसको AC से कनेक्ट कर. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज हर जगह मैं क्या लिखने वाली हूँ, V नॉट साइन ओमेगा टी. करंट यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, AC सर्किट पढ़ा होगा, तो यहाँ पे करंट क्या होता है, I नॉट साइन. इंडक्टर में करंट क्या होता है, करंट लैग्स इन इंडक्टर विद द वोल्टेज. ठीक है, सो I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 90 डिग्री से लैग करता है. ठीक है, डन है. इसका वोल्टेज फेजर कैसा बनेगा, वोल्टेज एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा टी. ओमेगा टी लाइन इज व्हाट, आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू ड्रॉ इट. ओमेगा टी लाइन इज दिस, सो दिस इज ओमेगा टी, राइट? नाउ दिस इज द वोल्टेज फेजर. सो दिस इज वोल्टेज फेजर. करंट फेजर, करंट एंगल कितना बनाया है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ओमेगा टी लाइन इज दिस, और उसमें कितना एंगल ऐड हो रहा है, माइनस पाई बाई 2. सो माइनस यू विल गो इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज करंट फेजर फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट. सिमिलरली कैपेसिटर में अगर तुम जाओगे, इफ देयर इज अ कैपेसिटर लाइक दिस, तो इस केस में हमारा वोल्टेज तो सेम रहेगा. करंट यहाँ पे क्या हो जाता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई. ठीक है, अगेन आई नॉट का वैल्यूज क्या क्या लिखोगे, आई नॉट यहाँ पे क्या होगा, वी नॉट बाई वॉट, एक्सएल. डन. यहाँ पे आई नॉट क्या होगा, वी नॉट बाई एक्सी, राइट? यहाँ पे अगर तुम इसका फेजर बनाओगे तो कैसे होगा, वोल्टेज इधर जाएगा और करंट प्लस पाई बाई 2 है ना, तो इधर जाएगा. करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, राइट? डन है. सो दिस इज फेजर. अब मैंने इतना कुछ क्यों बताया, चलो अब देखते हैं हम लोग. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, इन एन एसी सर्किट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट आर गिवन बाय दिस एंड दिस. अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा करंट वोल्ट, करंट किधर है, इधर है. करंट के लिए एंगल इतना है, वोल्टेज के लिए एंगल कितना है, इतना है. सो पहले वोल्टेज फेजर बना लो. दिस इज वोल्टेज फेजर, राइट? सो V इज हियर एंड करंट किधर होगा, 30t माइनस पाई बाई 4. सो मेरा जो करंट है, करंट फेजर ये हुआ. And this angle is how much, pi by 4. अब यहाँ से मुझे निकालना क्या था, एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट. तो इसके लिए तो फॉर्मूला है. एवरेज पावर हम कैसे निकालते हैं, V RMS I RMS cos phi, where phi is phase difference between current and voltage, right? So V RMS क्या होगा, V नॉट बाई रूट 2, I नॉट बाई रूट 2. ये वैल्यूज तुम पुट करो. V नॉट ये है, I नॉट ये है. ठीक है, फेज एंगल करंट और वोल्टेज का कितना है, करंट वोल्टेज का फेज क्या है, 30t. करंट का फेज क्या है, 30t माइनस पाई बाई 4. सो इफ यू आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस ऑफ दिस टू, फेज डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, पाई बाई 4. सो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस पाई बाई 4. तो वो तो मुझे मिल गया. नाउ वॉटलेस करंट के लिए मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया. सो हाउ वी कैलकुलेट द वॉटलेस करंट. अब तुम एक काम करो, करंट और वोल्टेज का फेजर तुमने बना लिया ना. मैंने एक डायग्राम तुम लोग को बताया था. इधर था R, इधर तुम्हारा क्या था, XC, और इधर क्या था, X. सो तुम ध्यान से, अगर तुम सारे प्रीवियस डायग्राम्स को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली, चलो लेट मी मेक इट मोर सिंपल. जो R के अलोंग, R का लाइन कौन सा था, दिस इज द लाइन ऑफ R एंड दिस इज द लाइन ऑफ XC एंड दिस इज द लाइन ऑफ XL. ठीक है, तो करंट का जो कंपोनेंट R के लाइन के अलोंग होगा, दैट विल बी your that component of current which will cause power consumption. ठीक है, and the component of I that is along XL or XC whatever, that will be your wattless current, that will not contribute in power. ठीक है, so R का लाइन कौन सा था, ये लाइन था, और L का लाइन कौन सा था, ये. तो यहाँ पे XC तो है नहीं, सिर्फ L है. So component of current here will be, in this direction it will be I cos pi by 4, and in this direction it will be how much, I sin pi by 4. So this component of current is what, wattless current. So whatever component of current is along the line of XL and XC is wattless, and whatever component of current is along the line of R, that is your what, that will contribute in power consumption. ठीक है, so यहाँ पे wattless current क्या लिखोगे, I cos what pi, sorry, wattless निकालना था ना, so I sin phi. Phi here is what, phi तुम्हारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, pi by 4, and this
I is what? Is this I naught or IRMS? This is your IRMS. ठीक है, याद रखना. This is your IRMS. Done. So now the question is clear, है ना? किसी को कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? Anyone? See, whatless current is very important. Done. Power, average power consumption तो फॉर्मूला से निकाल लोगे, but to calculate the whatless current you need to have a concept of कि ये इसका मतलब क्या है. Done. Again in theory class I will explain why this is whatless current and why this is contributing in power. That we will explain there. But that explanation is another thing. If you know even this much, you will be able to solve the question. ठीक है? चलो, किसी को डाउट है तो बता दो. No doubt, nobody? Done है? Everyone? किसी को डाउट है तो बताओ. No doubt. Okay. If there is no doubt, then we should move ahead. So I don't think we are left with much time, but still, this is a question of what? LR circuit. ठीक है? Again, मैं एक चीज बता दूं, LR सर्किट का वेटेज काफी ज्यादा है. मैंने देखा प्रीवियस ईयर्स में LR सर्किट से बहुत क्वेश्चंस आए. ठीक है? So properly deal with the LR circuit. Done. LR circuit का charging of LR circuit, discharging of LR circuit, and all kind of question related. So that is important क्योंकि questions काफी आए, हर साल आए. 2019 में I was looking at that. So in every shift there was a question from LR circuit itself. Also in 2018 I saw. So चलो, इस क्वेश्चन को तुम लोग करना. वैसे टाइम हमारे पास है नहीं. I will share the notes. So notes कहाँ होता है तुम्हें पता है? YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. So there you will get the notes और क्वेश्चन कर लेना. ठीक है? There are some like this question is there. इसको कर लेना. Only this question is there as a homework. तो इसको आप कर लेना. उसके बाद whatever questions, easy questions are there from the AC. ठीक है? उसको जरूर करना. क्यों? Easy questions. Why I'm telling कि all those small concepts will like that you will be able to grasp if you are doing all those questions. जैसे आज मैंने reactance बताया, simple circuit phasors I talked about. So if you're going to do those questions now, you will be able to like remember all these concepts. That will stay in your head forever. Done? तो questions जरूर करना. उसके बाद हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे. कल के क्लास में in the theory portion what I will be discussing, I will discuss your mutual inductance and self inductance, and after that we will move on to AC. Done? AC में I don't need to discuss much. That hardly I will take one class for AC, and there I will explain everything. Okay, so chalo. Everyone take care of yourself. Stay safe, stay good, stay healthy, and keep doing lots of questions. Don't take tension. Everything will be all right by January. Don't worry. Only thing is you need to put more and more effort. ठीक है? तो अपने तरफ से एफर्ट डालो. रेस्ट इज ओके. चलो, बाय बाय.